time definitely healed some of the wounds, but they never really go away, you know? Like, even this time when I was in Doha, like, you know me, like, I go on these long, like, urban walks, right? Like, urban exploration. Yeah. And there's something special, and it's about the city you grew up in. Yeah. Because when you go to like certain places, it takes you back to the memories that you had there. Exactly. And if it's in a place where you grew up, and like all those memories come back to you, you know, when you revisit these places. And every place in the city is one that you have like memories associated with, you know. Yeah. And I went to a lot of these places where I would spend time with like my girlfriend at the time, you know. Right. And these are memories going back to when we were like 15 and shit, you know, like from when we were like teenagers. Mm-hmm. And it's like it's hard, man. Even after all the time that it's been, it's hard to not go to a place and think of like what you guys did there, or like the time you spent there, you know. Dude, मैंने ये तो सुना था. I've heard this, yeah, कि men never forget like their heartbreaks, right? Ask a man about a woman he was with 30 years ago, 40 years ago, he'll still tell you, he'll still be heartbroken. Women have this thing where they can forget and they can move on, they actually forget. But men, यार, जिस तरह हम आज भी याद करते हैं जो पहली वाली हमारे दिल टूटे थे, it's always like that. Like, I don't know what it is, no matter how, like, we don't forget, we just learn how to live with it, you know. Like, आज we can't go to some places, can't listen to some songs, and it'll always be that way. I will never listen to those songs again, man, because वही यादें आ जाती. Bilkul, you know, it's like you feel like you're going through the heartbreak all over again. Exactly. Yeah. But no, man, it's true. Like, I don't know why, but I think you're spot on. Like the girls seem to, it might hit them hard at first, but like they seem to move on eventually, you know. And like at some point, they just completely forget that it even happened. Exactly. But yeah, man, guys are definitely different, you know. But it's tough, dude. Like, it's like, you know, and it comes back to what we were talking about earlier, like with guys, just because it's not really something you can discuss very openly with your friends either. Exactly. Yeah. Unlike girls who just completely open up to their friends, you know. They don't have to worry about like looking vulnerable in front of their friends. Yeah. And it's sad, man. I mean, there's no reason for it to be this way, and I really do wish I've always wanted to not be, you know, like a hopeless romantic or anything. I've never been one by choice. I always wanted to be more like the guy who doesn't care and who can leave and move on and not give a shit about a woman, yeah? But I've never been able to be that way. And the thing is, if that is not reciprocated, then you get into a place where you care too much. And I've, like I told you, yeah, like, आपकी भाभी तो ये जानते हैं कि जिस तरह मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ वो काफ़ी dangerous है, सही? And she's just looking out for me, and she knows कि ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, और सिर्फ एक टूटा हुआ दिल एक दूसरा टूटा हुआ दिल की मरम्मत कर सकती है. So I know she's right, but at the same time, it's very hard to like be matlabi or to bring dunyadari into your life when you're not that kind of person. No doubt, and but I feel that, bro. Like, but still, dude, like, you know, it's really something to be able to like the ability to like to care for someone and to you know to worry about someone even after you've been through all of this. Because man, a lot of dudes that I've seen, you know, after
a couple heartbreaks, it's like they just develop like a shell, you know. Yeah, yeah. Playboy बन जाती. Andrew Tate वाले फैन हो जाते हैं. यार एंड्रू टेट पर यार जितने बंदे उसके बातें सुनते हैं ना, मुझे लगता है कि ये दुनिया बर्बाद ही होने है. कि मुझे पता है, लाइक आई डोंट. Harrison, by the way, told me this कि जिस तरह उसकी like the way the algorithm works, right? If you see anything related to him, and if you just look at it, it just keeps coming up on your feed more and more, and you kind of get into that web, yeah. Like it's very hard to escape it. So I've tried my best to dislike everything that I see that is with him, yeah, because I genuinely do. Like I don't think he is a man that I would give the time of day to. But at the same time, I know कि जितने बंदे उसकी बात सुनती है, it's quite dangerous कि एक तो बात ये वो कामयाब नहीं, काबिल नहीं, कुछ भी नहीं. और उसकी बाद ये बात जो वो कह रहे हैं वो it will hurt people, you know. And there is a very like scary amount of people who are becoming very far right in their beliefs, you know. And I understand why, because it's become very hard to be a man, you know. For a long time you've all been attacked for just being men, and this is the natural outcome if you keep attacking people for small mistakes, and if you keep taking feminism to a level where you have to have a rival movement, then this is what is going to happen. But at the same time, it's still wrong. And Andrew Tate really is one of the many things that piss me off, but it's high up there now. No, man, I feel you, bro. Like, but the thing that Harrison told you, you know, I've heard of that a lot as well. Yeah. It just shows like how we're all kind of controlled by our algorithms now. You know, like this guy was just smart enough to figure out how the algorithm works and how an audience that's going to like consume his ideology. Yeah. And he knew his target demographic from day one. It's just like men who are angry, you know, and are looking for like a scapegoat. Exactly. And like he's just telling them what they want to hear, and he's kind of found that like audience. And yeah, man, like it's just scary that like by figuring out how your algorithm works, someone can actually just get in your head, you know. Yeah, buddy, and also Harrison told me this. If you're a male aged 18 to 45, right? 99% of them have Andrew Tate in the feeds. Like that's how prevalent it is. So what the only conclusion I've come to is that it is better to lie, right? So like how in real life I tell people I'm from here or I'm from there, this is my name. Online I lie about being a female who's in her 70s. Oh man, that's a sure way to not be recommended hate, you know? If you're gonna be honest, you're just gonna get the worst people recommended to you. But yeah, man, this is true, you know? Like, I see a lot of like, man, one was really strange, dude. It was like, you know, the like the dudes who do dawa in the streets of London. Yeah. I got recommended one where it was like, it was like a white guy, right? But he was like, he was a revert, like, but in London, like you can imagine, like in London, like you do have a community of reverts as well. Yes. He's like debating with some guy, right? Yeah. And I don't even know how this got recommended to me on YouTube, but he's like, "Oh man, you're probably not even a Muslim, innit? You're probably a Shia." He goes like, "You're all kufar. You're all kufar." And I'm like, man, like, there's like dudes, and then the comments it said, what Goda goes to Bradford once, and then dude, like internet comments are why I hang around, you know.
like काफी अच्छे humor चलते हैं अभी. I could not believe it, man. I'm just like, but you know, I think it's because yeah, Emma recommended me like this guy, you know, Mohammed Hijab. Yeah. When did He you recommend recommended this to me. you? What was that? When? Like recently? No, this is a while back. I remember. Right. But I saw like a lot of his videos, and then the algo bills on that, you know, like we were watching. Yeah. But man, like you know, the algo, it's just strange. Like it's led so many people down these rabbit holes. Yeah. I don't even know how Andrew Tate, man, he's become like this like role model for so many lads. Yeah, I really do despise it because like growing up we had role models who were men, you know, but they weren't toxic. This is proper toxic, man. Like it's going to build another like generation of men who have no idea how to treat a woman, and they also have no idea how to be a man. And like, why would you learn from Andrew Tate, man? Like at least our role models were better looking and better accomplished, I would say. Like, who has Andrew Tate been with? He looks like an egg, man. Honestly, yeah, I would rather them be like look up to Johnny Sins, you know. For official purposes, I do not know who that is, but yeah, I know who he is. Like Jack Nicholson once said, you know, maybe it's because it's so easy for me to get vivid that I don't understand who Johnny Sins is. Oh my god, dude. But no, I mean, fair enough, you know, like, but seriously, dude, like, the guys that people look up to these days are just like, they're all grifters, you know, they just know how to like, how to get views and kind of like what people want to hear, and they'll just give them that, you know. Yeah. Like Ben Shapiro, man, that guy's like. Ben Shapiro is a talking. Is a mouthpiece, man, and yeah, like I don't know how far like I've always known that there were people who watch Fox News, but like I've never like comprehended how stupid people can actually be. Like यार ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी खुद सोच ही नहीं होता. सही में bro, सही में. मतलब दिमाग बहुत है यार. जी और यार एक और बात है कि जो बेन शपीरो और आजकल की पैलेस्टाइन वाले बात चल रहा है और I've always been, you know, kind of not vocal but angry about it, yeah, but आपकी भाभी भी बड़ी नाराज है, and it's one of the few causes that she cares a lot about. So it's been something that I've been trying to learn more about. और आप जानते हैं कि हम जैसे बंदे तो सब कुछ जानते हैं, और अगर हम किसी चीज़ पर गौर करें तो यार PhD बन जाती हमारी. तो like it's been something that's pissing me off a lot, but Palestine is a whole different issue. But one thing I want to tell you, yeah, when I was in university, it's similar to your story. Like when I was in university, there was this girl who I knew, who was from Doha. She's from our school. She's younger, yeah. She's like 3 years younger. But I don't remember her, and I'm sure you don't either. Like वो उतने भी खूबसूरत नहीं था. But she was in my university, and I did know her then. And I saw her last year, and when she was in university, she was very liberal, yeah, in terms of her beliefs, in terms of the way she dressed. And I saw her last year, and she was hijabi, right? So I saw a couple of times. I didn't ask her why. Like, मुझे कोई क्या फर्क पड़ता है? मेरी थोड़ी दुकान है कपड़े की. But this one time I did see her in a place, and we were there for a while, right? So I asked her, so what happened, you know, what happened and what changed? So she said, कुछ नहीं, मैं तो कुछ देर घर पे फारिग बैठा था और YouTube देखता था, और मैंने मोहम्मद सुलेमान की वीडियोस देखने शुरू की.
तो मैंने पूछा उसकी बात क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने तो रमज़ान चल रहे थे उसकी सारी वीडियोस देख ली और मुझे लगा कि खुद ब खुद चेंज करनी है। तो यार मैंने उनसे कहा नहीं, तो बात तो अच्छी है मगर लाइक उससे उसकी ईमान तो एल्गोरिदम से मिला। और जो भी है ना, जितने भी हमारे ईमान है, हमें तो अपनी पसंदीदा शख्स से मिला तो ये भी अच्छी बात है, मगर हमें कभी एल्गोरिदम से यार कुछ भी मिलता है। आपको अगर ये जहन में आनी है कि आप इंसान नहीं परिंदा है तो ये भी आ जाती है। मगर एल्गोरिदम का कोई कोई यार कोई हाक नहीं उसमें। नहीं नहीं यार, ये बात तो है कि जमाना ही ऐसा आ गया है कि ना बंदे यार, it's the tail wagging the dog, you know. Nice, 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 nice. बस bro, यही जमाना ही ऐसा आ गया. It's like iRobot predicted, you know, like. Oh, dude, I Robot is a decent movie, but I hate Will Smith, man. I hated him back then. I hated him before he hated on Chris Rock, but yeah. No, yeah, the slap definitely, man, like changed how I see him. Yeah. But I was never a huge fan even before that, you know, like. मुझे समझ नहीं आता इस बंदे में क्या चीज़ है. Same है यार, मतलब he made that one song where they're just clapping throughout the song. You remember that? Yeah, yeah. Switch. यार मगर उसकी बाकी सारी गाने भी नालायक हैं. काफी ट्रिकी था ऐसे, you know, it's like it was nothing special. Even Men in Black, you know, it was like pretty average when you think it's about not a great movie. I don't understand any of the fanboys, man. And like one of our friends, actually a few of our friends, including the stupid doctor, is like a very big fan of the Fresh Prince of Bel-Air. But even that's not a great TV show. It's alright. It's not that great. Yeah, man. I think a lot of it is just nostalgia, you know, because people grew up when it was big. Yeah. But it's pretty okay, you know. It's nothing special, like. Exactly. And it's like a lot of the sitcoms from the 90s, like. Yeah, they were good like in general, man. Like the 90s had a lot of very good sitcoms, and this was just one that was good. Yeah, no, I agree, man. Like, because I think a lot of what makes them annoying, like some of the sitcoms annoying, was the laugh track. Yeah. Including our favorite show. Yeah, even like good shows that could have been better without the laugh track, you know, like Seinfeld had a laugh track, you know. Yeah. That 70s but then when you watch like Curb Your Enthusiasm, though, they removed it because they know that like a lot of things they just flow much better without the laugh track, you know. Exactly, and even the live studio audience is not really a great idea. Yeah, I think so. You know, if you notice, like it's almost gone now with the sitcoms that were made like after 2010 ish. Yeah. It's not like none of the none of the good ones have it, right? No, I don't think so. Like which one? It's Always Sunny. Dude, by the way, do you know It's Always Sunny is the sitcom with the most number of words per minute? Like, it's the most dialogue. It's the most dialogue dense sitcom ever. I think I saw that recently on Reddit. On Reddit, yeah, buddy. Yeah. हम यार एक ही बंदा है, सिर्फ दोनों तरफ से बात कर रहे हैं. Dude, even our algorithms are the same on Reddit, but no, man, I thought it was interesting, but I thought about it a little bit and it makes sense because it's based on dialogue. Show, you know? Yeah, and there's nothing happening. It's just dialogue, so obviously it's very dialogue rich. Definitely, you know, and it's a very clever show. Like a lot of it is about, you know, it's like the writing that makes the show, you know. Yeah. And so I can imagine it would be very dialogue heavy, but man, it's honestly like really quality humor, you know. And what was I thinking of? Workaholics as well. No laugh track there. Yes.
Parks and Rec, Fargo. Dude, I'm surprised you've seen Fargo. It's a good show. Dude, have you seen that? Yeah, of course. That's insane, man. Like, it's honestly, like, it's not as popular as it should be. Exactly. Like, it's you know what it is. It's that show that's always there, but you never choose to watch. Yeah, man. But anyone who's like, I would say like a TV show connoisseur, they would for sure know it because it's just so well done and like in terms of like filmmaking and production, It's very good. Yeah. It has to be up there, you know. Absolutely, man. But man, I can't believe you've seen it because it's such a niche. It's pretty niche show. It is. Like most people have seen the movie Fargo, like the Coen Brothers movie. Yeah. I've seen that as well. But the show's man, and that's a good movie too. It is. The Coen Brothers are a bunch that I honestly like, man. Yeah, they're they're interesting characters, you know. Yeah. Like, man, because they're from Minnesota, right? Yeah. And they're from this the homeland of black people. Yeah. Oh, dude, the fucking Chris Rock. Ain't no black people in Minnesota. Dude, it's funny that he would say that, but honestly, there are actually a ton. Have you heard of George Floyd? Yeah, dude, he was. Oh shit, dude, are we recording? No. Okay, thank the Lord. Why? Oh no, that was a bad. It wasn't, dude. It's nowhere near the kind of insensitive shit you said. Fair. But also, he said that a long time ago. That Chris Rock and his stand-up is from. It's actually quite far when you think of how old we are. Yeah, honestly, man, because like that his stand-up was really good back then. You know, like still though, I prefer Dave Chappelle between the two of them. Dude, we are the same person because like my top two is Dave and Chris, and Dave is best. Yeah, Dave was something else, man. Yeah. Like, it's I haven't watched any of his new stuff. I don't know how. Oh, you should. It's not as good as the original, but he's much cockier. You like it? No, good shit, man. You know, like, I saw him once in Minneapolis. You did not meet Dave Chappelle. No. Dude, it was funny because, like, I was expecting, you know, with a lot of stand-up comedians, when you go, like, you kind of know they're gonna do like their famous bits. You know what I mean? Because often that's like. Yeah. Oh, you're breaking up, man. Yeah, buddy, you still there? No, you're breaking up. No, hold on. Let me burst your bubble, buddy. We're middle-aged. We're not. No, we are, man. Like, I hope this is halfway. Fair enough. Yeah. You know, I can see that's valid though. You know, because
Dude, it's gonna be your birthday tomorrow. Yeah, yeah. You're turning 30, right? I am. Man, that's exciting, dude. No, it's not. You What know kind they, of like? Who is? oh, dude, happy birthday! Thank you, buddy. Thank you. It's already one there. G. Oh, dude, man, yeah, like I remembered like it was gonna be your birthday this month, you know, like it slipped my mind. Like it's hard to forget yours because it's you know. Yeah. It's hard to remember also because I've erased all traces of it from public platforms. No, that's cool, man. I think someone else. I think it's more special when people remember it despite Yeah, it not dude. being anywhere. Honestly, props to you for remembering. Like I have very few people in my life who are important to me, and they do remember it. And I also have people in my life who do remember it, but are not important to me. But you're definitely in the first group. But Oh, man, thank you, that man. means a lot. It means a lot to me as well. Uh, Yeah, Also, this is dude. my kind of like ऐसे जिंदगी चल रही. These are my 30s, I guess. So 20s तो कोई काम की नहीं थे, तो 30s तो कैसे होंगे? मगर अच्छा होंगे, देखता. Yeah, and you know what they say, like 30 is the new 20, no? Dude, so many people have said this to me in like the last few weeks. Like मुझे समझ like मुझे तो एहसास समझ आता है, मगर लॉजिक नहीं. Oh man, I meant it in a more cliche way, you know. I Like, know. that's what I'm telling myself. Like when I turn 30, like Yeah. that, you know, it's not too late. Like as long as दिखने में हम जवान लगते हैं, वही काफी है. G, and you have exactly 6 months from today, so you know. Ash, यार ऐश कर लो, मैं तो इंतजार करेंगे आपके दूसरे तरफ. बस यार हमारी भी उम्र होने वाली है जल्दी. जी. क्या करें यार, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गया. जी, हम तो हमेशा नाराज है कि वक्त गुजरते नहीं, और ऐसे गुजरते तो हम नाराज होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है यार कि हम अपना हिलाते रहे और देखते देखते पूरी दुनिया हिल गई. God damn it, man. Nice. Nice. But ऐसा अक्सर ये महसूस होता है कि ना वक्त कुछ ज्यादा जल्दी निकल गया. जी. पर खैर हुई यार, अभी भी हम अंदर से तो जवान हैं, और हमारी वो आप कोई बंदों से मिलेंगे जो हमारी उम्र के हैं, और आपको लगेगा कि आप यार अंकलों से मिल रहे हैं, जो ना पूरे वो अंकलियत उनके पूरे सर पे आ गई है. जी. चेहरे पर देख सकते हैं. बिल्कुल जी, चेहरे पर उसकी जिम्मेदारियां की लकीर दिख सकता है, और हमारे तो नहीं. हमारे तो मुस्कुराहट के भी लकीरें नहीं दिख सकता. कमाल वाह. ऐसा ही है, लेकिन यार के कोई बंदे तो हमारी उम्र में भी अंकल आंटियों जैसे देखते हैं. अब वो उनका भी आप सोच सकते हैं यार, मगर मैं फिर भी आपको करेक्ट करती हूँ कि हमारे उम्र के नॉर्मली अंकल आंटी होते हैं. कि जब हम छोटे थे तो इस उम्र के बंदे को देखते तो भाई नहीं कहते. हाँ, भाई तो नहीं कहते यार, अंकल ही कहते. जी. मगर आप बताओ, आप अपने ख्वाहिशें बताओ, हम सुनते हैं. हम दोनों एक ही साथ ख्वाब देते हैं जवानी के. बस यार क्या करें, मतलब जवानी तो क्या कह सकते हैं. कॉलेज में शायद कॉलेज के कुछ साल बाद खत्म हो गई होगी. जी. जब पर अभी भी मुझे लगता है यार कि अगर आप अंदर से जवान हो तो फिर बाहर की जो आपकी बाहर से आप कितने के हो, जी. वो उतनी अहमियत नहीं रखता.
जी, बात तो सच है कि दिल जिस तरह रहते तो वैसे ही बाहर नजर आते हैं, मगर मुझे वो जो जवानी की बचपना होता है मुझे वो भी कभी ज़्यादा नहीं था। तो जिस 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 ज़माने में हम बचपना करने थे तो हम तो बड़ी समझदार थे, और जिस ज़माने में समझदार होने हम यहाँ बचपना कर रहे हैं, तो बेहतर यही है। वो तो है यार, अभी तो अंदर से अभी भी नहीं लगता कि हम पूरी तरह से ना क्या कहते हैं, बचपना हमारा खत्म हो गया है। जी। बहुत कुछ ऐसा है यार जो आ, अभी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम आ, अभी भी वैसे ही फैसले लेते हैं जो हम शायद 10-15 साल पहले लेते होंगे। हाँ, सब गलत है। यार एक शेर है जो हमें हमेशा याद रहता है कि गलत निकले हर अंदाजे हमारे, आए नहीं अच्छे वक्त हमारे। ओ भाई, जी। भाई। मगर बात तो सच है। ऐसा नहीं है यार कि अब वक्त आगे चला गया और हम वहीं के वहीं रह गए। हाँ, हमें पता भी नहीं चला। हाँ यार, वक्त भी अजीब है यार, और अभी एहसास होता है कि यार सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। जी। कि पहले लगता था कि यार यारी दोस्ती फैमिली के आगे के बाहर भी और चीजें हैं जी। जिन पे ना जिन पे आप अमल कर सकते हैं। जी। पर अभी एहसास हो रहा है कि यार एक दफा शादी भी हो जाती है तो बंदा वही लाइफ में मसरूफ हो जाता है कि आपकी फैमिली है, हाँ जी। आप घर की जिम्मेदारियां होंगी आपकी, उसी में बंदा 24 घंटे मसरूफ रहता है। हम्म। और उसके बाहर आपके पास ना तो दोस्तों के लिए वक्त होता है, ना कोई आपकी और कोई चीज़ों के लिए वक्त होता है। जी। तो ऐसा ही है यार, बस धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि यार इसीलिए शायद लोग शादी भी जल्दी करते हैं, क्योंकि पता होता है कि बाद में तो सब आप अकेले हो जाओगे। यार बात तो सच है। तो बस हाँ यार, मसला तो है यार, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने बहुत बाद में जाके सीखे नहीं। तो हाँ यार, हर चीज हम अभी भी सही क्या सही वक्त के बाद ही सीखी है। ये तो है यार, ये तो बिल्कुल है कि वक्त होने के कुछ 5-6 साल बाद जाके सीखी होंगी। हाँ जी, हाँ जी। कभी काफी फैशनेबली लेट है हम। ये तो है ब्रो। पर बस ऐसे ही है यार, कट रही है फिर भी। हाँ जी, जिंदगी हमारे काट रहा। बस कोई कोई चीजों पे हम जिंदा है कि थोड़ा बहुत हम क्या कहते हैं, we have an appreciation for good art, good music, जी, ये good तो सच है। you गुड know गुड फूड, गुड विमेन। exactly यार, ये सारी चीजें, यही तो शौक है यार हाँ जिंदगी जी। के, हाँ जी, इसीलिए तो ये हम तो मकसद है यार जिंदगी की। ये तो है यार कि मतलब ना, जिंदगी में मजे भी होने चाहिए। हाँ। अगर मजे नहीं किए तो जिंदगी का क्या मकसद। हाँ हाँ, मगर जिंदगी तो हमारे मजाक उड़ा रहा ये भी है यार, अक्सर ऐसा होता है। है। जी। जी। पर बस यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम हम हमारी जिंदगी में सुकून तो है, जी। जी। और किसी चीज की कमी नहीं है, शुक्र है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यार आपके अ, भाभी भी आप काफी कहते हैं कि तन्हाई की अपने आप की मजा है। क्या बात है। ये भी है यार, कोई शक नहीं जी। कि पर आप तो तन्हा कहाँ रहते हो यार, आपकी जिंदगी में तो मसरूफियत ही इतनी है कि आपको तो तन्हा होने का कोई मौका ही नहीं मिलता होगा। यार ये सच है, मगर हम जिस तरह के इंसान हो ना, हम महफिल में भी तन्हा है कि हम वो है नहीं वहाँ।
हम मैंने आपसे ये कहा भी था कि वफा कभी महफिल में नहीं ढूंढो, वफादार हमेशा तन्हा रहता है। तो हम होंगे महफिल में मगर वो हम नहीं, और जिससे आपने मिला वो हम नहीं, और जिस हम की बात हम कर रहे हम भी उसकी तलाश में हैं। ओ भाई, ये तो लेकर आए यार आप। और पर वाकई में यार कि महफिल में अक्सर एहसास होता है कि हम वाकई में कितने तन्हा हैं, जी। क्योंकि तन्हाई का एहसास ही अक्सर महफिल में आता है। हाँ जी। कि आपको जब ये एक एहसास होता है कि भाई हम वाकई में कितने कितने अकेले हैं। जी। आ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए हम बाहर कभी जाते हैं अभी, क्योंकि हर दफा आपको ये एहसास होता है कि यार आम इंसान दुनिया में हमारे जैसे नहीं होते हैं। आ, यार ये तो हम वाकई वाकई मुझे कभी कोई मुलाकात में यकीन ही नहीं होता है कि हमें वो इंसान मिलेगा जिसे हमें चाहिए। हमारे जो भी ज़िंदगी में ऐसे शख्स है हम ऑलरेडी मिले ही है, और अभी मुझे लगता नहीं कि दोबारा मिलेगा। वो तो है यार, बिल्कुल। मुझे तो पूरा यकीन है कि हम हर किस्म के शख्स से मिल चुके हैं, जी। और अभी तो बस यार बस जी रहे हैं। जी जी, और ये भी बात है कि जिस ज़माने में हम मिले ना, हम आपस में मिले, तो उस ज़माने में तो यार हम तो अपने आप थे। तो हम आपको जानते थे जब हम खुद ब खुद क्या है नहीं जानते थे। और ये मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि लोग मुझसे मिलते हैं मगर मेरी हकीकत से नहीं। जब हम मिले थे ऐसे नहीं थे, हम दूसरे जो थे वही थे। तो अब हम ये नहीं कर सकते यार, इसलिए ये जो रिश्ते है, ये ताल्लुक़ है, ये ख़ास है। बहुत खास है यार, क्योंकि जमाना उस बीच इतना बदला है कि हम तो उस जमाने से पहले मिले थे जब हम पूरे ईमान से पेश आ सकते थे कि कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं होती थी। जी जी। आपके हमारे मतलब ताल्लुकात ही इतने गहरे होते थे लोगों के बीच कि ऐसा कुछ there was no dishonesty or हाँ जी। like or ill will, हाँ जी। हाँ जी। um, पर तब की दुनिया और थी, अब की और है। अभी जी तो यार ऐसे यार दोस्त बनाने की तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि जो जो वफादार होंगे या जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है। जी, वैसे हमने पूरे उम्मीद ही छोड़ दिया। बिल्कुल यार, ये तो अब ऐसे कहा होते हैं यार लोग, आमतौर पे तो लोग मतलबी होते ही हैं। हाँ जी। ऐसा तो यार ये दुनिया बड़ी मतलबी है। दोस्त भी बहुत ही मतलबी, दोस्त भी, शादियाँ भी, मोहब्बत भी, सब मतलबी है यार। बेहिसाब ये तो जो ताल्लुक़ है वो बड़ी कम है। बिल्कुल यार। बल्कि इसी चीज से कोई एक बात याद आई यार कि we're not recording, right? ना। Okay, okay. So when I came back here, right, like from India, after I visited Doha, India, and then I came back. Yeah. I still had some time to myself before work started, like like quite some time to like just hang out and like figure stuff out. Yeah. I was seeing this girl, right? Right. And man, like it was just crazy to me, but she was like married. What? Yeah, and she told me like later on, but she was like, Oh. yeah, she's in the middle of like a divorce, Right. but she had like 2 kids and stuff. No way. Yeah, man, you would never been able to tell. And man, the thing is, she was Pakistani. No. Oh. Yeah. And her name, you'll never believe her name, dude. What is it? Sana. No way. It's such a nice name, right? It is. Like, It is. it's a mix of like Sahar and Sama, which are very Yeah. like Dude, what? 2 nice names of themselves. Yeah. But yeah, man, I was just so shocked. I was like,
like some relationships I'll never understand them, you know, like Yeah, same. it feels so like so artificial, you know, Yeah, like everyone दिखावटी है. exactly, yeah, like everyone has like some kind of ulterior motive in being in a relationship. हाँ जी. तो हाँ यार, ये बात तो आपने सही कही कि ऐसे असली यार दोस्त और किस्म के भी जो ताल्लुकात हैं, ऐसे असली ताल्लुकात तो बहुत कम मिलते हैं जी. बेशक. शादियां भी अभी ऐसी हुई कि लोग जरूरत से पड़ता है, करने पड़ता है तो करते हैं शादियां. ऐसा ही है कि हम ये करना नहीं चाहते. तो ऐसी तो आपने भी बहुत शादियां देखी होंगी जहाँ वाकई में कुछ असली नहीं होता. यार मैंने सिर्फ ऐसी शादियां ही देखी. ऐसा आमतौर पे होता है यार. और मुझे तो यार कैसे ऐसे बहुत से बंदे पता है जिनकी मतलब बेगम होने के बावजूद भी वो ऐसी हरकतें यार तो मतलब जारी रखते हैं. वाकई हर बंदा ऐसे है यार. मैंने पहले भी कहा था, मर्द की मोहब्बत की कोई जिम्मेदारी नहीं या कोई यकीन नहीं करना. हम हर मर्द ना, अगर अच्छी लड़की मिल जाती तो भूल जाती कि बेगम है कि कोई भी है, भूल जाती. ये तो है यार. ऐसे तो हरामी बहुत देखे हैं हमने. सिर्फ हरामी देखे हमने. नहीं यार, अफसोस की बात है पर बात तो सही है. बात ये, हाँ जी. बस यार ये बेवफा दुनिया, ये बेदर्द जमाना. यार खूब. क्या करें इसकी दरमियान. हम क्या कर रहे हैं भाई? हम गलत जगह पर और गलत वक्त पे आ गए. वही यार कि हम गलत जमाने में पैदा हुए जी. जब ना धर्म है ना धर्म है. नाइस. मगर यार हम पैदा ही हुए, यही खता है. नहीं यार, वैसे यू नो देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं रहा है, पर मुश्किल वक्त हमने बहुत गुजारे हैं, ये मसला है. हाँ जी, सही है. पाकिस्तान जैसे है कि बड़े मसले हैं मगर काफ़ी खूबसूरत भी है. हाँ, खूबसूरती भी बहुत रही है. और ऐसे चंद वक्त जो हमने गुजारे हैं, जिनके बारे में आज भी हम अगर सोचें तो लगता है कि यार वाकई में बहुत हसीन जिंदगी रही है. जी सही है कि जो हमारे यादें होते हैं वो हमेशा गम की होते हैं. जो हमारे अच्छे याद है वो हमें याद ही नहीं आते. ये तो है यार, याद करना पड़ता है कि हाँ ये भी ऐसे भी नियत है. हाँ जी बेशक. फिर क्यों है ये तन्हाई. यार ये भी क्या गाना चला था ब्रो. हाँ जी. गुम हो गए हम, हो गए हम. और पता है वो इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के. यार ये हमारे मसले कि हमें हर डिटेल नजर आते है यार. लड़की में हर बात में इतना डिटेल नजर आते है कि हम कभी खुशी नहीं रह सकते. हो ही नहीं सकते यार. हमें हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. हाँ यार. और हमें वैसे ही कौन सी अच्छी भी चीजें मिलने की भी हमारी किस्मत में नहीं. सही है यार. मतलब we're too picky for our own good. Yeah, definitely man. But और क्या करें, ये आदत हमें छूटते ही नहीं. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. यार like at some point we're just going to be a reference conversation, you know, like कोई ओरिजिनलिटी नहीं होनी इसमें. जो भी हमें कहने हमने एक बार सुना है और दूसरे ने भी सुना है और सिर्फ वो बात बतानी है. बस
बस यार हमारे आधे से ज्यादा ख्याल ही मतलब रेफरेंस होते हैं जी तो जी वाकई ये लाइक हम कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ यार रेफर रेफर नंबर 5, लाइक वही बात है। यार मगर बड़ी बड़ी खास बात है। नहीं नहीं यार, हाँ, ऐसे रेफरेंस पकड़ना ही बहुत बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जी। अगर अगर कोई ऐसा बंदा हो तो वाकई में उसकी कोई बहुत खास हैसियत है जिंदगी में। जी जी ज़रूर ऐसी हैसियत है। और यार जो मतलब आज तक हमारे जितने कॉन्वर्सेशंस भी हुए ना, ऐसे नहीं हुए कि आपको ये पता है और दूसरे बंदे ने कहा हाँ नहीं यार मुझे नहीं पता, हमेशा ऐसे हाँ यार मुझे भी पता है, तुझे कैसे पता। और बिल्कुल यार। बात तो खास है। नहीं नहीं सही में यार, मतलब even things that are just so obscure, like तो no one would even have heard of them. हाँ जी um, कमाल काफ़ी की है, बात है यार। काफ़ी है। और इतने यार मुझे पता है, मैं हमेशा कहते हम एक ही इंसान है यार, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है मगर एक ही इंसान है। ये तो है bro, कोई शक ही नहीं इसमें। हमारे सोच ऐसे ही है, हमारे हालात ऐसे ही है, क्या चल रहा है, लाइक लाइक फाइंड द डिफरेंस, जो भी बात इसमें सेम नहीं है वो सिर्फ होता ना। बिल्कुल यार, जैसे even Kentucky Fried Chicken, their video cassettes, their Dude, VHS tape. हाँ जी उसकी दरमिया उसकी एड्स भी होते थे जो रोलर कोस्टर्स में थे, वो वही KFC यार, के। Kentucky। हाँ आए वाह, सेम सेम। यार मतलब ये चीजें भी मतलब आपको याद है कि though it's like no one in the world would remember these things, like For sure man. And वैसे वो याद करने की भी ज्यादा बात नहीं, सिर्फ बात ये है कि हम दोनों याद करते हैं। अगर सिर्फ मैं या आप था तो कोई बात नहीं था। नहीं 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 यार, बहुत वैसे it's just crazy how like similar our like upbringings were, जी right down to like the most minute detail. हाँ जी। और like the way everybody's life is so different, even like you and your sibling is very different, and Yep. the fact that ours is pretty much the same is a big thing man. Yeah, it's honestly something else, man. But it's really cool, dude. Like that's why anytime we catch up, it's like I know it's gonna be wild because there's like the most obscure things from our like childhoods that somehow we both remember. Yeah, and even like our stories now like एक ही बात चल रही है यार, जो भी गाना हम सुन रहे हैं तो वो एक ही है, जो हमारे साथ हो रहे हैं वो भी एक ही बात है। यार हमारे ये I don't know जुड़वा how. वाली सीन कुछ नहीं चल रहा। हमारी See, जिंदगी तो डेविड धवन नहीं डायरेक्ट कर रहा। जुड़वा फिल्म की तरह हम भी एक ही रास्ते में चल रहे हैं। जी 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 वही है। नहीं नहीं यार। But man, I can't believe you've heard Rubicon like by Prem Dillo. हाँ जी Yeah, बड़ा कमाल का गाना है वो, it's like you'll hear it a lot in Brampton, like people like bumping it in their cars or yeah and, like and the Uber drivers will play it sometimes. But yeah, man, the new Punjabi music is really good. it's proper fire man. Honestly, yeah, man, it's even kids at my school listen to it. They're like it's just it's the real craze right now. Nice, it's not bad. Like it's good taste. No doubt. Yeah, because most of the kids are Punjabi though, so Yeah. it's like and I don't know, man, like compared to like say the US where kids are a little more whitewashed, Yeah. like here they're all like proper Punjabi, even if they've grown up here, they still like speak the language. They still like pretty connected to like their language and culture. I think it's because there's no American dream. There's no need for like becoming American in Canada. They don't have like
the unknownness, you know, you're who you are, and as long as you're free to not conform to anything, it's like fine to be whoever you are, and it's better that way. I would agree, you know, like, you definitely see people embrace who they are a lot more. Yeah. Like, I remember, man, when we were in, like, middle school and stuff, we would, it was kind of cool to, like, act like you're not desi, you know what I mean? Yeah, it's still the same, buddy. Like, आज भी वो cool बात नहीं बनी. But here I see like a lot of them embracing it. At least with like the Punjabi kids, you know. Yeah. Like they won't like shy away from like being desi or like speaking Punjabi, you know, and stuff like that. Yeah. Whereas I think a lot of us, like with Goans, I would see this all the time. Like they would really try to like deny who they are. Yeah. As a way to like feel that they're cooler, you know. Yeah. And it's just refreshing to see that when like these kids, they even though they've grown up here, like they don't really like feel that way, you know. Yeah. Like they even like listen to Punjabi songs and stuff in class, you know, and I hear them speaking Punjabi too, you know, like they don't act like it's uncool to speak it and stuff, you know. Yeah, it's nice, but that would never be us, you know. Yeah, I know what you mean, and I guess it's different with Punjabis because उसकी काफी अच्छी कल्चर है यार, ये भी बात है. Yeah, it will be, I would say. And the language sounds really good though, man, you know? It does. It sounds like really, I don't know, dude, it sounds cool when you hear people speaking it, you know? Yeah, that is true. Because a lot of them, I swear, man, they're not people with like fancy degrees or like very like highly educated people. Yeah. Like some of the Punjabis you'll meet here are like straight from the village, you know? But still like they, I don't know, I think the fact that they just carry themselves with like, you know, like they kind of just embrace who they are, you know? Yeah. That like a lot of people look very favorably on that, like just they're not afraid to be who they are. Yeah. But यहाँ तो सारे, even the Pakistanis are Punjabi, bro. Yeah, dude. Something special. Oh my god. But shit, man, it's like, you know, having said that, man, like, we should definitely meet somewhere in Europe, man, you know, like, we should do, like, yeah, let's do, like, a hangout. Yeah, let's do London or France or something. Yeah, London and France would be dope, dude, you know? यार तो जिंदगी बड़ी बड़ी है, एक करता है. याद करना पड़ेगा क्योंकि ना 1-2 साल बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी निकलते जा रही है और हम ना वही के वहीं कुछ नहीं कर रहा है. कुछ ऐसा करना होगा यार. मुझे लगता है ना कि जिंदगी ने हमें काफी बताई कि हम क्या करनी है. अब तो हम बताएंगे जिंदगी को हम क्या कर रहा है, जो अपनी मर्जी हो. अब जो अपनी मर्जी, जो अपना मेरा जिस
बात हो रही थी? लंदन फ्रांस ओ हाँ भाई, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करना होगा यार, क्योंकि चलते हैं ऐसा यार। लग रहा है कि जर्नी के दिन निकलते जा रहे हैं और कुछ कुछ खास करना है, पता है जी ना, जी कुछ देखना है, कुछ कहीं जाना है, हाँ कुछ I want to have like experiences, you know? ये I have the same feeling like जो खुद की पसंद की कुछ बातें तो अभी करनी ही है। बेशक यार, इस पे अमल दरामद करें। देखते हैं यार, जब I think you know starting um, actually at July and August, those 2 months I'm gonna be fully free. Nice. Like because of the summer break, Yeah, like yeah. but I don't know if it's a good time to go somewhere and like you know, but I can get started on like figuring out where, you know, like where we would want to go, what places we want to check out. Yeah. It would be dope, man. It would be something. It's still man I've no if like literally there's nobody or nothing holding मेरी यार जिंदगी कौन देख रहा है कौन मेरी इंतजार कर रहा है करता है नहीं बिल्कुल यार, बड़ा बड़ा फिट सीन रहेगा। जी जी बेशक करनी है करता है And you've written so much about Paris that it would be wrong if you didn't go, you know? यार मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ अगर जिसके साथ जा रहे थे वो तो हो नहीं रहा तो बेशक एटलीस्ट पेरिस हो सकता है नहीं तो यार वो भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा इंतजार करें, वो भी जल्दी आप दोबारा जा सकते हैं वहाँ। हाँ हो जाएंगे यार आप तो दुआ कर ले और अगर कहीं ना कहीं आपको भाभी को दिखे ना दो तीन अच्छे बातें मेरे भी कर लिया करो हो जाएंगे कुछ ना कुछ बिल्कुल यार, आपकी तो पूरी तारीफें ही करती हैं हमने कि ये भी बात है यार हाँ हम पूरा दिन आपकी तारीफें करते रहे। यार अभी इतने तारीफ तो उसने सुना ही होगा कि वो यकीन ही नहीं करते कि बंदे हकीकत ही कहते हैं मगर नहीं नहीं यार, हम I can be a good wingman, you know? Dude, you're the best wingman, man. I've said this many times. मेरी जिंदगी में सिर्फ एक था और सिर्फ एक काफी है बड़ी अच्छा है बेशक बेशक यार, बस मौका दें आप हमें, हम राजी कर लेंगे उसे। जी 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 जब हाँ मैं बताती हूँ और जो भी आपने सुना नहीं आज तक ना सब मान लो कि ज़रूरत में आपकी भाई ने कुछ ना कुछ कहे होंगे तो आप भी हमारे साथ ही दे दो बिल्कुल बिल्कुल bro। और यार लड़की पटाने में बहुत काम करने पड़ते हैं यार 6 दिन लड़की है। यार वो भी एक ऐसी फिल्म थी, पर अहमद को कुछ ज्यादा पसंद थी। जी जी हमें अहमद की ये वो फिल्म का नाम सुन के ना, तो it gets back to that thing about how we can't listen to certain songs or watch जी certain movies जी because they बंदे remind। हाँ बंदे भी अभी पीटीएसडी दे रहे हैं हाँ यार, उसने हमारी खलौना वो भी खराब कर दी हमारे जी लिए। क्या करें Oh right। यार मगर कुछ प्लान करते हैं एंड वैसे आज it was a lot of fun I don't know how long it's been like we started 6:30 yeah it's fuck me it's been 7 hours uh, yeah yeah but it was honestly a lot of fun and honestly we should do this more often I say this all the time but we should do it more often तो जब भी आपको वक्त मिले सिर्फ बताना हम तो तैयार करते हैं यार नहीं बिल्कुल करेंगे यार, क्योंकि वक्त ही वक्त है अब तो, जैसा कि आपने कहा था, you know, we're like life's too short for us to right look back on things that make us happy, so we should definitely do this more often, you know, like we for sure deserve it। हाँ जी मगर आप अगर काम में मसरूफ़ है और इतना फारिग नहीं तो फिर भी हम 1 घंटे के लिए ऐसे भी करते कोई मसला नहीं सिर्फ बताना हम उस वक्त पर
खुदाफिज कहेंगे कोई मसला नहीं, सिर्फ मिलने नहीं नहीं में, बिल्कुल जो मिलने में खुशी है ना उससे शायद एक हफ्ते चलते यार। भाई, ये तो कमाल की बात करते हैं यार। पर बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दफा हम मिलें तो बात हो तो सुकून मिलता है कि यार कि जी कम से कम all is right with the world. हाँ, ओ सराय विदास दुनिया की मुझे नहीं पता वैसे। नहीं, अभी तो है तो दिया, हमारे अलावा क्या है। नाइस नाइस नाइस। हम यार बेशक नार्सिसिस्ट है, तो हम अपने आप की फेवरेट है और हम ही दुनिया है। ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ पर बिल्कुल यार, आप सोने धोने का इंतजाम करें। जी जी। हम हमारी होती रहेगी। But happy birthday again, man. थैंक यू Like, मैन, इट you मीन्स should अ get लॉट up टू to मी, something. मीन्स अ लॉट टू मी। Uh, up to, and I know it's like something you don't really do much, but ये you should treat yourself on your birthday. Like, do something that you wouldn't normally do. देखते हैं यार, कुछ ना कुछ करते हैं कल। मुझे तो याद ही नहीं थे, तो आजकल ऐसा है कि किसी को याद दिलवाना पड़ता है, मगर सही है, कुछ करते हैं कल आज। करें बेशक, क्योंकि ये क्या कहते हैं यार, ऐसे दिन मनाना भी बड़ा जरूरी है। जी जी, हाँ हाँ, हमारे होते हुए मनाना सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी But यार आप let you get some more Z's. I yeah, won't keep you too long. जी uh, होती है यार, जल्दी मुलाकात बनाएंगे सीन हमेशा की तरह। जी, खुदा करे। और यार, it was a lot of fun, yeah, I do mean that, and let's do this sometime, and thank you again for remembering. Oh, of course, man. But yeah, dude, let's talk soon. You have a good rest of the week. Well, Yeah, keep me posted. Like, let me know how things are going. sure, you as well, and दुआ कर ले आपके भाई के लिए, और आप तो हमेशा हमारी दुआओं में तो रहते हैं। भाई कमाल। जी नहीं यार, दुआ तो बिल्कुल करेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही जल्द सब सारी आपकी दुआएं भी कायम होंगी। इंशाल्लाह। तो यार, जो भी हालात है, हम मिलते हैं दोबारा। बेशक यार, चलें। चले, होते यार, हाँ यार, ख्याल रखें आप भी ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ब्रो।